हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल है आप लोगों का? गुड टू सी ऑल दिस मॉर्निंग। टुडे 6th अप्रैल थर्सडे 2023। ठीक है, तो अब आप लोग आ गए हो तो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड एज यूजुअल आई विल टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो। आपसे बात भी करूंगा, आपके क्वेश्चंस भी लूंगा एंड ड्रीम 11 पे करोड़ों का मेगा ये कॉन्टेस्ट तो ड्रीम चलकर 11 डाउनलोड वाले करो और टीम बनाओ यार। the amount of ads amount of टुडे 6 the amount of ads they make. So Jai Hind, I can see Sumana K, she was our student, last batch. Sumana from Bangalore, Shivam Jat, Ratul Bora, Soni Bhisht, Surya Singh, Diksha Chaudhary, Pavan Saran, Virat Tyagi. Okay, and Ram Singh Chabarwal. Jai Hind sir, I'm 76-year-old air veteran. I'm a fan of you. Jai Hind sir, you made my day. 76-year-old veteran देख रहे हैं हमारा चैनल। बहुत सर, थैंक यू वेरी मच राम सिंह छबरवाल जी। ये आपने ये टाइप करके हमारा दिल खुश कर दिया, बच्चों का भी, नेक्स्ट जनरेशन का भी। सो थैंक यू वेरी मच। और आप सबको फिर अमन, शिवम, पन्ना लाल मिश्रा, हर्ष ढुल, संजीव खुशवा, अशोक रेड्डी, शिवम पांडे, रतुल बोरा, प्रिंस भाई। तो आज हनुमान जयंती है, सो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब हमने उस दिन रामनवमी की शुभकामनाएं दी थी। त्यौहार जो है सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं और कम्युनिटीज़ के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, सो एनी ऑफ दिस फेस्टिवल शुड बी अ ट्रिगर फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स, टू टू गो बैक टू एक्चुअल इथॉस क्या है रिलीजन के पीछे, एंड दिस ग्रेट पीपल जिनकी याद में हम रामनवमी मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। ये सब, ये कुछ ना कुछ बहुत ऐसा हमें ज्ञान दे के गए, उसकी तरफ ध्यान दो, ना कि हाउ इट कैन बी यूज इन अ डिस्कॉर्डेंट मैनर। चलो, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। वी विल स्टार्ट दिस सेशन विद ऑल द एडिटोरियल्स टुडे। ठीक है, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सरनजीत, तीरथ, सुमेध, हर्षवर्धन, प्रतीक पनवर, मनीषा। ओके, चलो, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। सिर्फ 10 दिन रह गए। ठीक है, 9 days इन फैक्ट फॉर द CDS एंड NDA एग्ज़ाम। इसकी भी लास्ट में बात करूंगा कि हाउ शुड यू अप्रोच द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलो, सो लेट मी सी द लाइट। या लाइट इज़ ओके, चलो गुड। तो शुरू करते हैं फिर। वी विल स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया अखबार है, इसका एडिटोरियल पेज बहुत अच्छा होता है और ये मैं कई बार बता चुका हूँ मैं। इसमें जो है लिखने के लिए बहुत जगह होती है। यू कैन एनोटेट, यू कैन अंडरलाइन, यू कैन एंड वेरी इजी टू रीड। ये देखो, वेरी इजी टू रीड। तो आज ये मिस्टर श्याम सरन का, एम्बेसडर श्याम सरन का आर्टिकल है, रीबैलेंस ऑफ पावर। आई हर्ड हिम फ्यू डेज बैक, 3rd अप्रैल आई वॉज इन मानिकशा सेंटर वेयर ही वॉज अ की नोट स्पीकर। और यही जो उन्होंने आर्टिकल में लिखा, यही बात उन्होंने वहाँ पर भी कही थी, रीबैलेंस ऑफ पावर। तो इस पर बात करेंगे। ये हिस्ट्रीज एज, इस पर बात करेंगे, जहाँ देयर हैज़ बीन अगेन a lot of chapters have been removed and many historical incidents को उसको टोन डाउन कर दिया। या काफ़ी कल इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, बहुत ही खतरनाक हेडलाइन थी कल इंडियन एक्सप्रेस, वो है। देन न्यूट्रल नो मोर, दिस इज ऑन द फिनलैंड के ऊपर है। तो शुरू करते हैं, जय हिंद। शुरू करते हैं रीबैलेंस ऑफ पावर। दिस इज चाइना रशिया पार्टनरशिप सिग्नल्स अ शिफ्ट इन जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस दैट हैज implications फॉर इंडिया। तो जिस तरीके से द चाइना एंड रशिया आर कमिंग क्लोजर, वी कैन नॉट बी नाइव टू दिस। ये हम जो है, तो ही सेज चाइना इज नो लॉन्गर ए न्यूट्रल पार्टी इन यूक्रेन क्राइसिस। जो चाइना बोल रहा था मैं न्यूट्रल हूँ, वो नहीं है। इट इज़ फर्मली इन रशियाज कॉर्नर, तो इट इज़ फाइटिंग फॉर रशिया इन रशियाज कॉर्नर। This is an important shift in the geopolitical equations. It also gives China much greater leverage over Russia and on the latter's capacity to pursue independent relations with other states such as India. ये बड़ी बात है कि now it can control the Russian policies and Russian leverage. It can leverage over Russia. So इसके बाद रशिया
ईरान के साथ ज़्यादा दोस्ती करता है या पाकिस्तान के साथ करता है, और दिल बैलेंस विद इंडिया, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसको देखते हुए. चाइना नाउ हैज़ द कैपेसिटी टू लिमिट रशियाज एंगेजमेंट विद इंडिया इंक्लूडिंग इन डिफेंस. तो चाइना जो है ये फोर्स कर सकता है रशिया को कि भी आप इंडिया का वो छोड़ो. एंड सो दिस कैन, ये बात मैंने पहले भी कही थी. दिस रशिया चाइना कमिंग टुगेदर एट द वर्ल्ड स्टेज इन दिस मैनर. शी जिनपिंग गोइंग टू Moscow for 3-day visit during the war. First visit by a big country head of state to Russia after the war. So this must now enter our own foreign policy and security calculations. So he says now we must be ready. Now we must be ready with our own options. And China sees, Russia also sees कि more and more India is moving towards the American side or American thing. The manner in which we have become part of Quad, the way our navy is exercising with Quad countries, and the entire language on the Indo-Pacific is been criticized by China. And Russia, of course, we have been by and large neutral in the war, but still, so ये rebalance of power है मिस्टर श्याम सरन का. He was an ex-ambassador, one of the most respected persons in the diplomatic community. अब आते हैं हम एडिटोरियल्स की तरफ. ये है एडिटोरियल हिस्ट्रीज एज. एंड ये कल अच्छा हुआ यहीं पे पढ़ा, मिल गया मुझे मेरा पेपर कल का, देखता हूँ. तो लेट मी सी वेदर इट्स हियर और इट हैज़ गॉन, जिस पे कि वो कल हेडलाइन थी. मैं आपको दिखाना चाहता था जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए कि व्हाट वाज द हेडलाइन यस्टरडे. आई होप आई डोंट मिस आउट. शुक्र है यहीं मिल गया. ये थी कल हेडलाइन. ओनली इंडियन एक्सप्रेस कैन डू दिस. दिस वॉज यस्टरडेज पेपर हेडलाइन ऑन द इशू जिस पे आज एडिटोरियल. ये अभी मैं आज का एडिटोरियल पढ़ के बताऊंगा, ठीक है. सो बोथ व्हाट हैज बीन डिलीटेड इन द बुक्स एंड ओपेक वे इन विच इट वॉज डन गो अगेंस्ट स्पिरिट एंड प्रॉमिस ऑफ NEP. सो इसे जो आपने किया और जिस चुपचाप तरीके से किया, इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. दैट इज व्हाट इट सेज. Then it says in the academic year that has just commenced in some parts of the country, secondary and senior secondary school students have been introduced to a revised set of social science textbooks. Curriculum reforms should be par for the course in history, sociology, political science. They are necessary to update the students with shifts in policy and society. These changes should reflect new thinking in the disciplines and also remove past blind spots and blinkers. History textbooks have, for instance, been too big empire centric. They don't have enough on the new historiography of different regions of Northeast, for example, or the archaeological finds that have changed understandings of Indus Valley civilization. So he says, yes, कि history books में mostly it is about the two big empires, the Mughals and the British. They don't say, but and large regions like Northeast are not there. And also our understanding of the Indus Valley civilization last few years, वो नहीं है इसके अंदर. However, he says that but in the latest revision they do not address these gaps. जिस चीज़ की अखबार वो तो आपने किया नहीं. You didn't do that कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना शुरू करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना शुरू करो, हमारी हिस्ट्री से कोई और चीज़ ना. What you did was the excise content related to chapters in history that have been acquired political overtones on the current regime, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Another set of changes pertains to key fraught moments in the independent India's political history. But देश की अगर political history, which is just 75 years back we got independence. Another 75 years you go back, you will be in 1857. And actual war of independence, जो real freedom struggle पढ़ना है, मैं हमेशा कहता हूँ read this book, Freedom at Midnight by Dominic Lapierre and Larry Collins. Is a most important, most readable book on India's independence. So उसको he says कि India's independent political history, Mahatma Gandhi's assassination, emergency and Gujarat riots. देखो ये सारे डार्क चैप्टर्स हैं. Assassination of Mahatma Gandhi by Nathuram Godse is a dark chapter. How can we close our eyes to it? How can we close the eyes why he was killed? Then emergency, 1975, 2.5 years of emergency by Mrs. Indira Gandhi when she was unseated by a court in Allahabad. Then 2002 riots in Gujarat, or 1984 riots in Delhi and many other places in the country, or for that Meerut riots जिसका कि कल मैंने जिक्र किया था. तो
द यंग स्टूडेंट्स मस्ट नो क्या हुआ है, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं. तो he say, then they say कि not much consultation has taken place, and the last para I'll read says the Gujarat riots related erasures betray and anxiety to paper over the fault lines and institutional failures that continue to inflict pain and injustice on the minorities. अब ये देखो लाइन कि अगर बच्चा पूछेगा कि अभी हुए थे रॉयट्स, क्यों हुए थे, लोग क्यों मरे, why did so many people die? So you want to cover up इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स एंड आर फॉल्ट लाइन. हमारी फॉल्ट लाइन है ये, हिंदू मुस्लिम इज अ फॉल्ट लाइन, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन इज फॉल्ट लाइन. ये हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं इंडिया की. वी मस्ट एक्सेप्ट इट एंड यंग जनरेशन मस्ट मूव फॉरवर्ड कि ऐसा नहीं करना है. सो इट सेज द रिमूवल ऑफ सेंटेंसेस ऑन कम्युनलिज्म and the RSS in the passage on Gandhi's assassination indicates discomfiture with a turning point that continues to resonate in Indian story. The deletion of section on protest movements curtails. So you must know right from independence what all movements took place. In fact, there should be a chapter on the Mandal Commission and the kind of movement that took place. The Babri Masjid movement that took place. The riots in Delhi. Kashmir issue. Why should we shy away from what happened in Kashmir, in Punjab, in Northeast, in Sri Lanka? IPKF operations. Yesterday we have lost General Harkirat Singh. Yesterday he has died. He was the first GOC of the Indian peacekeeping force in Sri Lanka. He belonged to my regiment. तो इन चैप्टर्स को ये अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हाउ विल यू एवेल्युएट द लास्ट 50 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो ये वी कैन इवन हैव अ डिबेट ऑन दिस इन YM in couple of days time. Now, this is neutral no more. We move now on to the diplomatic stage. This is of course dealing with फिनलैंड. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे आगे भी बात करूंगा कि फिनलैंड और रशिया की हिस्ट्री भी काफ़ी चेकर्ड हिस्ट्री है. एंड व्हाट इज द रीज़न दैट फिनलैंड ज्वाइनिंग NATO नाउ हैज़ implications on unity of Europe and what implications does it have on Russia now. मैंने बताया फिनलैंड के आने से NATO का बॉर्डर, फिजिकल बॉर्डर विद रशिया इज नाउ 2500 किलोमीटर्स. 2500 किलोमीटर्स, ये बहुत बड़ी बात है. सो 31st नेशन. सो डेली माइट वांट टू वॉच क्लोजली द इम्पैक्ट ऑफ फिनलैंड ज्वाइनिंग NATO एंड द आर्कटिक रीजन. सो ये हमारे लिए है कि न्यू दिल्ली दैट इंडिया मस्ट ऑल्सो वॉच कि इसके क्या रिपरकशंस है. हाउ डज रशिया रिएक्ट टू दिस. ओके, हियर इटसेल्फ देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक इसके पीछे है, या This is by Mr. Tushar Gandhi. Mr. Tushar Gandhi, author and great grandson of Mahatma Gandhi. Author and great grandson of Mahatma Gandhi. He has written on the same issue. These are excerpts from his book and what he has to say on this issue, on the assassination of the Mahatma. Yeah, now we move to the explained page. वहाँ पे मेरे पास काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने के लिए है, काफ़ी कुछ है बताने के लिए. और ये लुक एट दिस. मीडिया वन, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्रीडम एंड नेशनल सिक्योरिटी. सो दिस yesterday's judgment is also of great importance for you all. and ये issue भी आपके जहन में होना चाहिए, freedom of the press. and connected to this is the defamation law under which Mr. Rahul Gandhi has been given maximum sentence of 2 years. उसके ऊपर भी एक editorial है. So all these things, freedom of speech, freedom of the media, ये सब issues जो है आ रहे हैं. तो the Supreme Court has quashed ban on TV channel. Apex Court makes key observations on the role of press in democracy, underlines principles of natural and open justice. So they have told the government, stop giving envelopes and stop saying in national security we are banning this channel. So very, very harsh, this thing on this case where, of a channel in Kerala, of a TV channel in Kerala that has been reinstated by Supreme Court. Now we come to Finland. अब वापस आते हैं फिनलैंड. ये इतना बढ़िया आर्टिकल है, इसको ही काट के अगर आप अपने रजिस्टर में लगा लो नोट्स के में, आपको उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं.
दैट इज़ वाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस पेपर का और जिस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। अब वो कुछ एक दो बार पढ़ोगे आप लोग कहते हो हमें समझ नहीं आता है, इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आप तवज्जो नहीं देते हो, अंडरलाइन नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, उसको फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा नहीं पढ़ते हो। सो करंट अफेयर्स कांट बी लर्न फ्रॉम सिंपल यूट्यूब वीडियोज़। यू विल हैव टू सिट विद पेन एंड पेपर। ये देखो पेन होना चाहिए और डायरी होनी चाहिए और लिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस बाद में लूंगा, क्वेश्चंस बाद में लूंगा। सो फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, व्हाट्स द एंड ऑफ फिनलैंडाइजेशन मीन्स फॉर रशिया एंड द वेस्ट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने दिया है कि वाई डिड फिनलैंड ज्वाइन नाटो, एंड फिनलैंड और रशिया की पुरानी टाइज के बारे में बताया, क्योंकि पड़ोसी देश हैं तो हिस्टोरिकली साथ में रहते आए हैं हज़ारों सालों से, तो उनकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताया। एंड नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, एंड फिनलैंड की पार्लियामेंट के ऊपर। एंड फिनलैंड इज़ नॉट अ वॉक ओवर कंट्री, बट दे फेल्ट कि द वे रशिया हैज़ अटैक्ड यूक्रेन, अगला नंबर होता है हमारा यहाँ। सो दे went and applied and they have got the membership. अभी next स्वीडन है, two countries objecting to Sweden, that is हंगरी और टर्की। सो उनको मनाने की बात है, then Sweden will also join. Now this is heating up. जो पैलेस्टीन इसराइल इशू ये फिर से गरमाया जा रहा है, और ये हमेशा जनरली यहीं से स्टार्ट होता है, अल अक्सा मॉस्क। ये ऐसी जगह है जेरूसलम, मैं गया नहीं हूँ बट मेरी बकेट लिस्ट पे जाना है मैंने, जहाँ पे the holiest of shrines of three important religions are located in one place: Islam, Judaism and Christianity, तीनों। तो ये मेल्टिंग पॉट है यहाँ पे। एंड पिछले बार भी जब फायरिंग हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे, एंड इंटरनेशनली पीपल हैड टू इंटरवीन टू स्टॉप द फाइटिंग, इट स्टार्टेड विद द अल अक्सा मॉस्क। तो यहाँ पे पुलिस हैज एंटर्ड द मॉस्क and taken some people hold. Now they will retaliate. अब they will retaliate and let's wait and watch. And Israel के अंदर you are aware, the Netanyahu government, which is a right wing government, is facing a lot of backlash after the judicial reforms जो उन्होंने भी back ले लिए हैं, but there is stress there. तो ऐसा तो नहीं है कि this thing will flare up the situation further. Now Macron is visiting. Macron is the young president of France. He is visiting China. Want to engage China in shared responsibility in peace, says Macron. But at the same time, Zelensky is here. Zelensky ने जब से लड़ाई हुई है, he hasn't worn a coat and tie जो बाकी heads of state पहनते. He is always in a t-shirt, a combat t-shirt or a black color t-shirt, and with a beard. So Zelensky is here in Poland to thank Poland. Poland is giving them MiG-29 aircrafts. MiG-29 aircrafts Poland is giving, and also giving them tanks. अब बातें हम फ्रॉम आवर नेबरहुड, डेडली chaos इन पाकिस्तान अमिड स्क्रैम्बल फॉर स्केयर्स डोनेशन। तो पाकिस्तान की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इज़ वेरी बैड। इन्फ्लेशन इज़ एट ऑल टाइम हाई। मैंने बताया था इन्फ्लेशन है 35%, हमारे यहाँ 6.5%। रुपी, पाकिस्तान रुपी हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 300 टू अ डॉलर। पेट्रोल के प्राइजेस मस्ट बी 200-300 रुपये पर लीटर। सो पाकिस्तान इज़ इन बैड स्टेट। एंड ये महीना है जिसमें कि बिकॉज रमज़ान का महीना है, दिस इज़ अ मंथ वेयर लॉट ऑफ चैरिटी इज़ गिवन टू पुअर पीपल, सो देयर इज़ अ स्क्रैम्बल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। तो मैंने कल बताया था ये देन जो पाकिस्तान की आज कंडीशन है, इसके लिए काफ़ी हद तक जुल्फ़िकर अली भुट्टो एंड हिज प्रोटेजी ज़ियाउल हक, एंड ज़ियाउल हक फाइनली गॉट हिम किल्ड। ज़ियाउल हक वाज मेड प्रेसिडेंट बाय भुट्टो। पाकिस्तान पे मेरे को, आई कैन स्पीक टू यू फॉर आवर्स टुगेदर। ज़ियाउल हक वाज मेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाय भुट्टो, एंड व्हेन ज़ियाउल हक बिकेम चीफ, ही इम्प्रिजन्ड भुट्टो, एंड भुट्टो को एक फेक केस में, एक पॉलिटिकल मर्डर के केस में, भुट्टो वाज हैंग टू डेथ। ही वाज हैंग टू डेथ। सो that is the sad chapter. And Bhutto used to say कि we will fight with India for 1000 years, चाहे हमें घास खाना पड़े. We will eat grass, but we will have a nuclear weapon to fight India. And see this fixation on nuclear bomb, on revenge and religion. ये तीनों चीज़ें बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक. इसलिए please don't be out to take revenge against somebody has done something to you. Best is to move on.
ठीक है, बेस्ट इज टू मूव ऑन, डोंट कम्पीट विद पीपल, यू हैव योर ओन स्टाइल। चलो अब आते हैं हिंदू पे। हिंदू पे यहाँ है ये ग्रोथ मैथ, लॉन्ग व्यू ऑफ साउथ एशियन ड्रामा। ये मैं जान करके पढ़ के थोड़ा सुनाऊंगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको लिखा है रामानाथन कुमार ने, बट ही इज कोटिंग एन आर्टिकल रिटन बाय मिस्टर के सुब्रमण्यम। मिस्टर के सुब्रमण्यम, द मोस्ट ब्रिलियंट स्ट्रेटजिक माइंड इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो जिनके बेटे सुपुत्र हैं भी जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो के सुब्रमण्यम सर ने जो है ना स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। ही वॉज, यू कैन से, मॉडर्न चाणक्य फॉर इंडिया। तो ही रोट एन आर्टिकल इन मार्च 1987। कब लिखा? मार्च 1987 में ही रोट एन आर्टिकल फॉर IDSA वेयर ही स्पोक ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद हर नेबर्स। और आज 36 ईयर्स के बाद दैट आर्टिकल इज बीइंग कोटेड, दैट आर्टिकल इज बीइंग कोटेड। और इसको जो पढ़ेंगे, आई डोंट नो पॉलिसी मेकर्स हाउ मेनी ऑफ देम रीड द एडिटोरियल्स एंड दीज आर्टिकल्स एंड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बट दिस speaks of that how India must take care of its neighbors, and how at least the three big neighbors, that is India, Pakistan, Bangladesh, we share the same language, same cuisine, same dance, almost same gods, same history we have, you know, but why the discourse? And the same thing is required within India. So he's trying to say that as we see our neighborhood, we should also see inside India. So issues of secularism, democracy, federalism, linguistic autonomy were not matters of choice for India, they were compulsions for India to survive. कितनी बड़ी बात कह के गए वो। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ठीक है, और फेडरलिज्म, लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, अपनी भाषा में वो करो भी, तमिलनाडु वाले तुम तमिल में करो, कोई प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हिंदी नहीं इम्पोज करें, तुम्हें मलयालम में करना करो। ये देश बहुत, हमारे देश में इस बात की वो है। सो दिस वॉज अ कंपल्शन फॉर इंडिया टू सर्वाइव एज अ स्टेट दैट वी आर टुडे। तो ही सेज बाहर की तरफ देख रहे हैं, पहले हमें अपनी तरफ, अंदर की तरफ भी देखना चाहिए। दैट इज वॉट ही सेइंग दैट। आगे देखो, if Indian unity and integrity were to be preserved, and this is what I keep saying, ये मैं आज से नहीं, इवन व्हेन आई वाज इन सर्विस में यही बात बोलता था हमेशा। इफ इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हैज टू बी प्रिजर्व्ड, India must pursue, India pursued these values because they were not just imported Western values, but because they were absorbed and internalized during the India century long freedom struggle. जो 100 साल हमने अपनी आज़ादी के लड़े, वो that 100 years has taught us that we must have secularism, linguistic autonomy, federalism and democracy. ये हमने वो 100 साल में, क्योंकि देश की आज़ादी में सब लोगों ने हिस्सा लिया, हर तबके ने, हर रिलीजन ने, हर सब ने हिस्सा लिया, ठीक है। सो इसे ये वेस्टर्न वैल्यूज़ नहीं है, ये इंडियन वैल्यूज़ हैं आज के दिन। Democracy was no more an import than Islam or Christianity in India, which had a long tradition of keeping its doors and windows open and absorbing influences from outside. India has endured because of this enormous capacity to absorb, internalize, modify and transform, and yet retain its personality. In the 19th century, as democratic values emerged in Western Europe, they were accepted on an eclectic basis in India. तो ये मैं सुबह पढ़ रहा था, मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगा। और ऐसी चीज़ें आप ग्रुप डिस्कशन में, इंटरव्यू में आप बात करोगे तो लोग कहेंगे यार ये बच्चा YMA का, इसको सीधा ले जाओ। बिकॉज दिस, इफ़ यू कैन आर्टिकुलेट इन दिस मैनर, इफ़ यू कैन आर्टिकुलेट इन दिस मैनर any subject, you will be identified. Okay, now the takeaways from UN World Water Conference, इसके बारे में कल बताया था आपको कि after 46 years finally यूनाइटेड नेशंस हैड अ वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। तो पानी की बड़ी किल्लत है, देश में बहुत किल्लत है, मैं बहुत बोल चुका हूँ हाउ वी नीड टू सेव वाटर, बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। ये बताऊँगा। ये इमेजिन स्लर, दिस इज अगेन द पेपर इज टॉकिंग ऑफ डिफेमेशन केस अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी। ही सेज अभी लटकाना नहीं इसको, ये दिस विल बिकम अ टूल, लॉ बिकमिंग अ वेपन, कि यू डोंट लाइक उसको किसी चीज़ में मैक्सिमम ऐसी सजा दे दो कि जस्ट 2 years एंड देन आप लड़ते रहो केसेस कोर्ट के अंदर, बट यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू कांट फाइट इन द नेक्स्ट इलेक्शन विच इज कमिंग राउंड द कॉर्नर। सो
this is again, they're saying the courts must take immediate action on this and इसको जो है reinstate किया. That's what has been the stand of all the leading newspapers of the country. अच्छा, this is on the human policing. ह्यूमन पोलिसिंग जो मैं पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता हूँ, हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता हूँ. एंड दिस इज रिटन बाय मिस्टर आर के राघवन. ही इज़ अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. इसका मतलब आईपीएस ऑफिसर है ना. सीबीआई में आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स. आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईबी, सीबीआई, ऑल दिस आर बाय रॉ, ऑल दिस आर बाय पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस. तो इन्होंने लिखा है. तो ही सेज कि and he has given example of this young IPS officer in Tamil Nadu जिसको दांत तोड़ने का, उन्होंने कई लोगों के दांत तोड़े हैं, and the manner in which he has been suspended. young कुछ ही साल की सर्विस हुई है. brutal torture. and I can imagine हवलदार and ASI and all doing थाना culture, हमारा जो कूटने का जो culture है. but an IPS officer who's graduate from the top academy, who studied through UPSC, goes and does this. So इस पे जो है इन्होंने कहा पुलिस एक्सेस एंड हाउ पुलिस मस्ट ये टॉर्चर और ये सब बंद होना चाहिए. एंड सो दिस इज ऑन द पुलिसिंग. ह्यूमेन होनी चाहिए पुलिस, उसके ऊपर. So this is it from, of course, they are covering the Trump. Trump is going to use this. Is the first president of US to be, arrested, and charges. There are many charges against him. He said this is insult on country, and because I love America, मेरे लोग पीछे पड़ रहे हैं. ठीक है. Then of course clashes in Jerusalem, and ये not declaring deletions in textbooks and oversight, says head of NCRT. So ये issue अभी दबा नहीं है, इस पे चलेगा कुछ दिन, but let's see. You must understand this only from point of view if this comes in a group discussion or lecturate or for your knowledge and to grow up as a broad based student, young student. Okay. Now we come to Times of India. Times of India, facts of the matter. By deleting chunks of history from textbook, what NCRT is hurting most is quality of education. ये Times of India delete का बटन लगाया हुआ है. So all papers have covered this in this manner. एक मिनट मेरी light को थोड़ा सा. Where is my light? Okay, let me remove it. ठीक है. Some fluctuation, power fluctuation, but don't worry. So this is on this. It says bitter difference over history to be taught in school textbooks are neither new nor confined to India. But this debate has higher stakes here because school learning outcomes are poor and improving them is critical to empowering millions. A grounding in objective facts and before that the idea of shared objective facts is minimum bedrock of India's progress. तो पता होना चाहिए हमें कि हमारे शेयर्ड आइडियोलॉजी क्या है, शेयर्ड कल्चर क्या है, शेयर्ड लैंग्वेज क्या है. So, and then he says, when textbooks revisions takes place in a way that suggests the facts of our dense history can be replaced by new facts with every new mood of the nation, it entrenches the dangerous disease that goes by the name of WhatsApp University instead of ये जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ये देखो लिखा हुआ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि अब फैक्ट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे डिलीट. मतलब ये सोच होगी कि नहीं भैया अभी इवन द फादर ऑफ द नेशन वी विल नॉट स्पेयर. ये मुगल्स, टीपू सुल्तान, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को भी नाउ वी वांट टू ट्विस्ट इट टू डिमिनिश रोल ऑफ सम पीपल एंड so really sad. So with the Yogi government notifying last week that UP board schools will fully teach NCRT rationalized syllabus, कि NCRT का नया syllabus पढ़ाएंगे हम, rationalized syllabus. I remember this was a debate topic in my school when I was a school student, almost 40 years back.
दिस वॉज अ मे बी मोर देन 40 years बैक, 45 years बैक. ये हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था, क्या इतिहास को दोबारा लिखना चाहिए. And after that we are still, instead of IT, space technology, matlab, that is where learn history what it is there and move forward. Now this is on the just injustice. A detailed report on the legal system shows how and why the poor are its biggest victims. So this is also a known fact, along with, if you see the police reforms, civil services reforms, and other things, that finally when we see the justice system in India, you realize is the poor who languish in jail. अगर bail के लिए कोई नहीं है तो you will stay in jail. ठीक है, there is nobody will fight your cases if you don't have money. You will not be able to hire a team of lawyers. So they say, according to Lalit, 70% of the litigants in criminal cases are below the poverty line. तो 70% लोग जो क्रिमिनल केसेस में हैं, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडियाज justice delivery system has been weakened by alarming decline in legal aid provisions. Between 2020 and 2022, data showed that there was 67% decline in legal services clinics. So a lot of free legal clinics used to be organized. A lot of senior advocates say, I will fight for free for the poor. So that is what is, the paper is trying to say. This is, of course, Taiwan. This is the president of Taiwan, and she met the US House Speaker despite warnings from China. So China can keep giving warning, but Taiwan and US will continue to do what they love to do. ठीक है, चलो. So here I have finished this part, and now I'll take few of your questions. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, खुशकी वतरी इज माई यूनिट्स वॉर क्राई. ठीक है. रोहित टैग्स, सर आई एम फॉलो इंडियन एक्सप्रेस बट सारा पेपर सेम नहीं होता है, आगे पीछे होके. पहले तो इंग्लिश पिकअप करो रोहित. विद दिस इंग्लिश यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द न्यूज़पेपर. आप न्यूज़पेपर को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट पिकअप योर कम्युनिकेशन. उसको जोर जोर से पढ़ो अखबार को. ठीक है. यस, अमन इज राइट. इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग कि यार ऐसा हुआ था भाई, दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ था दोबारा नहीं होना चाहिए. दे आर ट्राइंग टू डिलीट दिस चैप्टर्स. और वो आप देख ही लिया आजकल, young and middle age and old generation, the effect of WhatsApp university and hate, it has become so predominant in social media. It is simply amazing. Thank you Kirti Shortia, thank you. Aman, sir, who is BC? BC is battery commander. BC is battery commander. Battery commander is a major. Battery commander squadron company. आरटी में बैटरी कहते हैं, आर्मर्ड में स्क्वाड्रन कहते हैं, इन्फेंट्री में कंपनी कहते हैं, कोई फर्क नहीं. ठीक है. सो बीसी इज बैटरी कमांडर. संजीव खुशवा, सर फ्रांस has invited Prime Minister to visit Paris as guest at the annual. Please explain. Oh, this is just like our Republic Day parade. Just like Republic Day parade. हमने बुलाया उनको पीछे. He was chief guest here. France. So we have invited many French presidents. So it's something like that. As Turkey is part of NATO, it's good. It doesn't have very good relations. It's okay. Uske relations are just about okay with Russia. Can army officer join RAW? Not while in service. Not while in service. But after retirement, there are few appointments for joining. Shivam Pandey, sir, after Hanuman Jayanti, along with my friends and some bhaiya and didi, we did 10 kilometer running. After this, we have put up a little temple in playground. Okay. Millions of people. Exactly, I agree with you, Aman.
Good, Pavan. Today I distributed prasad to many people. I'm feeling happy. अच्छी बात है. Why is OPEC reducing supply of oil and cutting? Yeah, OPEC keeps doing it based on the market forces, so you don't have to, Why DGs of paramilitary forces are IPS? Ask the system. It's always been there. ये नहीं कि अभी है, हमेशा ही. All DGs of paramilitary forces are IPS. Sir, should we go through Bhagavad Gita before going to SSB? Samit Bhardwaj, I'll request you to go through current affairs. I'll request you to go through your PIQ form. I'll request you to go through organizing ability. I'll request you to go through your notes before SSB. Arvind Maurya, you're a serving soldier in Navy, but I'm appearing for SSB. How will I prepare? You can join the BOAC course. कल start हो रहा है. BOAC 17. I still have few slots. You can join this course. Who is JCO in Army? JCO Junior Commissioned Officer. He is between an OR and officer. So Naib Subedar Major. Sir, have you read the book Glass Palace by Amitav Ghosh? The book is amazing. No, I haven't read this book, Ashok, but Amitav Ghosh, I love his books. It must be very good. What is your opinion? NATO inviting India to join a treaty. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. India will never become part of any military alliance. At least I don't see it happening anytime soon. India-Pakistan relations, I can speak anytime. Okay, Gyan. Explain both parts. Explain both parts. That's what we have learned. See, Aman, the charter of the NATO says all countries must agree. All countries must agree to admit a new member. So इसीलिए NATO में कंसल्टेशन के बाद ही नया मेंबर आता है. तो all countries have to say yes. Even if one country says no, it's difficult. चलो. Do army officers after retirement get cantonment areas to live? फिर तो cantonment में सर्विंग कहाँ जाएंगे? No, not at all. आप जाओ अपने गाँव शहर जहाँ गए हो, सर्विस कर ली, thank you very much. Why should you get area to stay in cantonment? चलो तो all the very best to you. I have already suggested one book, that is Freedom at Midnight. It's a must-read book on India's freedom struggle. And then, of course, Dominic Lapierre. A lot of books by Shashi Tharoor and by William Dalrymple do reflect a great part on India's history of last 200-300 years. ठीक है, चलो, all the very best then. बहुत मज़ा आया. And please follow, make notes, improve your English. For English, join the BOCC course. और जिसका भी SSB आने वाला है, you have no idea about SSB. Tomorrow we are starting the BOAC 17 course. कल हमारा परसों एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है BOAC 16 से. So choice is yours. Best online mentoring course I'm bringing to you at absolutely pocket friendly cost. ठीक है, तो my second innings is for your first innings, ये याद रखना. ठीक है, चलो, all the best to you. Have a great day, and once again my best wishes to everyone on